ऑफ कॉपर, बोर्ड पे लिखा, करा दी, एटॉमिक नंबर 29 and lambda MO means molybdenum is the wavelength of the K alpha X-ray line of molybdenum. Atomic number 42. Then find lambda copper upon lambda molybdenum. One 1.99, 2.14, 0.50. रोहित आ गया? यस सर। रोहित क्लास अटेंड करी थी बेटा, फिर एक्सरे की छूट गई थी जो? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंसियर बच्चा ऐसे होता है। ये क्वेश्चन बताया जाए मुझे। अब आप लोग मुझे चैट फैकल्टी में मैसेज भेज सकते हैं, मेरा लैपटॉप चालू हो गया। ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। अभी ऊपर फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर के अल्फा बी कितना होता है? फॉर्मूला बोलिए। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। याद है कि नहीं? तो अगर स्क्वायर कर दें तो ये आ जाता है, हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं? Am I right, प्रखर? हाँ सर। यस सर। यस सर। लैम्डा कॉपर अपॉन लैम्डा मॉलिब्डेनम करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा जेड मॉलिब्डेनम माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आएगा जेड कॉपर, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल गाइस, राइट? तो जेड मॉलिब्डेनम कितना था बच्चों? 42 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 29 माइनस 1 का स्क्वायर। लो कर दो सॉल्व। 2.14 आ जाएगा आंसर, याद है अपने को। कैसा लगा? जोर से लगा कि धीरे लगा? बताओ जल्दी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कब का होगा? कब आया होगा ये? टेल मी ईयर, व्हिच ईयर यू आर? 2014। तब तो टफ हुआ करती थी आईआईटी। 2014 में कचरा हो गई आते आते। 2008 का क्वेश्चन, आई रिस्पेक्ट दिस क्वेश्चन, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन माय माइंड फॉर दिस क्वेश्चन, बट फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। रोहित बन गया बेटा? यस सर। Very good. Now, I have another question. You'll have to give respect to this question. Very good. The intensity of X-rays is plotted against wavelength. Is plotted. यही तो कल भी तो अपन ने वेवलेंथ के अगेंस्ट प्लॉट किया था। अगेंस्ट वेवलेंथ याद है? The minimum wavelength found is lambda c. More than one correct है? The minimum wavelength found is lambda c. And wavelength of K alpha is lambda k. As the accelerating potential increased,
Susan, if you have any doubt in characteristics or continuous X-ray, please ask. Okay, anyone, if you have any doubt, Chinmay, छोटा सा भी doubt है तो feel free to ask. Okay. So So it is first, second, third. more than one correct. अरे क्या कर रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. अपार क्या कर रहा है? अच्छे से पढ़ क्वेश्चन. गुस्सा मत दिला. यार मान ले. 3 and 4. गलत. अपार फिर से कर. गणेश रॉन्ग. क्या करता है अभिजीत? जल्दी बता रहे. सिंचना क्या कर रही है? श्रेया. मुस्कान सोच जल्दी. प्रखर, प्रतिपाल, सारा. श्रेयस कमान. टाइम होगा. देखो अपार ने जो बोला है 1 and 3 सही है. अपार क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वेवलेंथ होती है वो पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट होती है. बोलो, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोटेंशियल. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. स्पीक, एवरीवन स्पीक विथ मी. Wavelength of characteristics X-ray is independent from accelerating potential. Okay, click on yes. If it is okay, everyone click on yes. Okay, that's good. Now the next concept is, so lambda k, there will be no change in the lambda k. Understood Apar? Yes, sir. Okay बेटा, okay. चलो अभी जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, so lambda minimum means lambda c is equal to 12400 upon voltage. If you increase accelerating potential, what will happen? Decreases. So c is 100% correct. Now there will be no change in the lambda k. Let's make graph. There will be no change in the lambda k. Look at the graph. This is graph. Okay, sorry, I made a mistake. Now it is correct. This is lambda c and this is lambda k. Now you tell me, if you increase accelerating potential, lambda k will remain as it is. Lambda k will remain as it is, and lambda c will decrease. Could you understand that? Could you understand that? Yes, sir. Okay, that's good. That's good. So the difference between these two will increase. Here you are correct. अपार सभी बच्चे समझ पाए? ये गलत, ये गलत. Understood this? Yes, sir. चलो क्या है, थोड़ा सा मजा तभी आता है जब ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस आए इस तरह के. Now give me 1 minute. Write AR type question. Assertion reason type question. Today's question number 4. Statement 1. This is assertion. If the accelerating potential
in an X-ray is increased. The wavelength of characteristics X-ray do not change. This is statement 1. बच्चों statement 2 कहता है when an electron beam strikes the target, the part of kinetic energy is converted into X-ray. When an electron beam strikes the target, the part of kinetic energy is converted, ऐसे ही लिखा है भैया, is converted in X-ray energy. अब see what are the options. Like statement 1 and 2 both are correct and statement 2 explains statement 1, then answer is 1. But if statement 1 and 2 both are correct but they do not explain each other, then answer is 2. Answer is 3 if statement 1 is correct and statement 2 is wrong, and answer is 4 if statement 2 is wrong and 2 is correct and 1 is wrong. Hello. 2 means statement 1 and 2 both are correct but there is no explanation, right? 2 is also correct but 2 is not explaining statement 1. तो statement 1 का क्या बोलना है कि ये इंडिपेंडेंट इसलिए होती है क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, wavelength of characteristics X-ray depends on atomic number, not on accelerating potential. Okay, so answer is 2. Both statement are correct but statement 2 is not correct explanation of statement 1. लिखो both are correct but statement 2, समझ आया क्यों नहीं कर रहा कनेक्ट? Because correct explanation ये होता, the wavelength of characteristic X-ray depends on atomic number and the wavelength of continuous X-ray depends on accelerating potential. Both are correct but statement 2 is not correct explanation of statement 1. समझ आया प्रखर? समझ आया? Yes, sir. Okay, that's good. ये थोड़े से सारे अच्छे सवाल हैं. चलो अब होपफुली ये हो गए. अब हमारी ये डीपीपी रेडी है, उसके सवाल अब हम कर लेते हैं. Just a minute. X-ray PDF. Look at this. Ab these questions are for IIT mains and NEET. Okay. आपने क्या सोचा सारे क्वेश्चन लिख के कराते रहूंगा? ऐसा थोड़ी है. अभी याद भी तो कराऊंगा तुम लोग को. देखो कैसे बड़ा भट तब सब याद ऐसे तेज तेज जवाब दोगे अब तुम लोग. X-ray tube is operated at 50 kilovolt. Minimum wavelength produced is, बता जल्दी. 12,400 divided by voltage in Armstrong. So 12,400 upon 50 kilovolt into 30.
इन आर्मस्ट्रॉन्ग कितना आ रहा है? 124 0.25 अपॉन 500 अप्रॉक्स 0.25. डन. इजी था. सी दिस इज नीट लेवल. डन. आगे बढ़े. सॉल्व दिस. Which of the following wavelength falls in the X-ray zone? 10 to the power minus 2 Armstrong. This is called hard X-ray. 1 strong, 1 Armstrong, soft X-ray. I'll take D. Safe. Okay? Done? Sir. Question number 3. Which X-ray will penetrate most? Can you explain? Which X-ray Sir, has what? Sir, A. A. Apar is saying A. Apar, on what basis you want to answer A? सर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. तो ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा. Okay. Anyone else want to answer this question, or will you answer this question, or you will leave directly? Sir, A. A. सर वेवलेंथ जितनी कम होगी सर पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा. चलो ठीक है भैया, देख लेते हैं. गिव मी अ मिनट, है ना, मुझे सोचने दो. क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा जब उसका जो गैप होना चाहिए, या अगर इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाए ज्यादा तो कम वेवलेंथ की कंटिन्यूअस एक्सरे छोड़ेगा. लेकिन पेनिट्रेट करना मतलब एब्जॉर्ब ना होना और सीधे निकल जाना. एब्सॉर्ब बिना हुए इलेक्ट्रॉन का सीधे निकल जाना क्या संकेत देता है? पेनिट्रेशन पावर हाई. पेनिट्रेशन पावर के बारे में मैं क्या जानता हूँ? मुझे 1 मिनट सोचने दो. हाई पावर पेनिट्रेशन, लो पावर पेनिट्रेशन. ओके. ए. ज्यादा पावर की है तो जरूरी नहीं कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए इलेक्ट्रॉन, देर से होगा. सो if it has more energy, that particular wave can penetrate, ज्यादा अंदर जा पाएगा, क्योंकि ये एक्सरे कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा मेटल का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो थोड़ा अंदर जाने के बाद ही एब्जॉर्प्शन हो पाएगा. ओके, आगे बढ़े. 4th करो. Sir, हर क्वेश्चन का जवाब ए लगा दो तुम लोग. बिल्कुल सही. गामा रेज इज इवन मोर डेंजरस देन एक्सरे. गामा रेज हैज वेवलेंथ लेस देन एक्सरे. गामा रे एक्सरे से भी बहुत बहुत खतरनाक है. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. wavelength is given. Minimum wavelength is equal to 12,400 approx divided by voltage, and this is Armstrong. So voltage is equal to 12,400 upon lambda minimum, that is 0.3. Chinmay, tell me by using mobile. 40 किलो. सर डी. Okay, you get 40 kilovolt, right? Okay, that's good. आसान है ना एक्सरे बच्चों? In radiotherapy, X-ray is used to treat cancer by controlled exposure. Yes. X-ray इतनी ताकतवर होती है कि कैंसर सेल्स को मार देती है. This is for NEAT. Done?
Now answer. Yesterday I told you why hydrogen atom do not emit X-rays. Option A. Very good. क्योंकि एनर्जी गैप ही नहीं होगा तो वो कैसे होगा फिर? Right? Yesterday I told you. Do you remember? X-rays were discovered by Harrington. भगवान करे ऐसे ही क्वेश्चन आए क्यों? X-rays are stream of electron, stream of positively charged particle. No, no. Electromagnetic radiations of high frequency. Yes, no. Understood? This is also for NEET. The voltage applied across X-ray tube is nearly in nearly 10,000 kilovolt. 10,000 kilovolt. Yes, C. I'll touch C in the kilovolt, in the range of kilovolts. Okay, बताया था ना 20 kilovolt, 30 kilovolt, 10 kilovolt. We made graphs. Do you remember that? Now try to answer question number 11. The characteristics X-ray radiation is emitted when the electron accelerated from fixed. No. Source of electron emit more. No. Bombarding electron knock out one electron. C. क्या लगता है? C. C is correct. Done. Question number 12. Molybdenum is used as target element of production of X-ray because easily absorb high velocity electron, a heavy element with a higher melting point. He can easily detect electrons. Element with higher. I think B is correct. मेल्ट हो जाएगा ना, नहीं तो एक्सरे बहुत पावरफुल होता है बच्चों. अब अगर एक्सरे की एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाया मेटल तो पिघल ही जाएगा ना. यू अंडरस्टैंड दैट? So target metal must have high melting point in X-ray. When you use target metal, it must have high melting point because X-rays are very, very powerful. Understood? Yes, sir. Okay. Question number 13. Mosley's law relates the frequency of line X-rays with the following characteristics of target element. Atomic number. C. Under root frequency is equal to A into Z minus B. So answer is C. Done? Compton effect is associated with. लो, Compton effect मत पूछना मुझसे, इसके मैं अलग पैसे लूंगा. लेकिन Compton effect is connected with the X-ray. Compton effect is associated with the X-rays. Remember. Okay. You give me more money, so I'll explain you Compton effect. ये मैं जैसा explain करता हूँ तो YouTube में नहीं मिलेगा. Okay. X-rays are in the nature similar to. This is a tricky question, बच्चों. Cathode rays are electron. Cathode rays are fast moving electrons. Fast moving electrons. So de Broglie waves are matter wave. They are also different. De Broglie waves are matter waves. Whereas gamma rays are EM waves. Gamma ray is EM waves. What is your answer, bachcho? Beta rays also fast moving electrons. What is your answer? Gamma. Gamma rays. B is your answer. Very good. Very good. The maximum energy of X-ray photon can be the cathode and anode potential difference. Potential difference is given. They want to know energy. 10 is to power 5 electron volt. It is there. Means it is C. It is C.
10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁻⁻1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं समझे? अब यही पूरी एनर्जी तो कन्वर्ट होगी। क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, बोलो हाँ दिया, दिया कि नहीं दिया? तो अब ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एटम से, पास होते होते क्या हो रहा है, बोलो रिटार्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी खत्म हो गई, जाते जाते इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी ही खत्म हो गई, तब कौन सी वेवलेंथ निकलेगी? मिनिमम वेवलेंथ। कुड यू अंडरस्टैंड दैट? सो हाउ मच एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन हैव? E into 10⁵ electron volt. So you can multiply and divide by 10 and you can write, सॉरी वोल्ट्स में आ जाएगा ना, E आ गया ना, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो इसको तुम कह सकते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E you can write here. You understand that? Now this can be written as 10⁻⁻1 mega electron volt. Could you understand this kinetic energy? So if electron lose its entire kinetic energy, then only you will get lambda minimum, right? Could you understand that? Click on no if you have any doubt. Raise your hand if you have any doubt. You can speak through mic also. You can send me chat also. You can send me message in chat box. You can raise your hand like this. Any doubt? आगे बढ़े। दर्शिता बन गया, पारस बन गया बेटा, चलो। The shortest wavelength of X-ray emitted from X-ray tube depends on the shortest wavelength depends on the accelerating potential voltage applied to the tube. बस। The wavelength of X-ray is the order of. This I don't know. This I don't know. What should be the answer? कंप्यूटर जी लाइफलाइन हम चाहेंगे। मुझे जहां तक पता है कि 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 0.001 आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सरेज, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरेज। तो आई थिंक आंसर इज सी। एम आई राइट? केबीसी में भेजो और एक्सरे के सवाल पूछ लो। 7 करोड़ रुपया लेके आएंगे कसम से। बस ये ना पूछ लें कि रंगस्टन जो जिसने डिस्कवर की थी उसकी भाभी का नाम क्या है, वो कैसे पता चलेगा? है ना? X-ray and gamma rays of the same energies may be distinguished by method of production, I believe. Their intensity or their ionizing power. I think intensity. No, this is difficult. But one thing is for sure, gamma radiation you will get from nuclear reaction, and X-ray you will get by bombarding fast moving electron on the heavy metal target. Method of production. What do you think, बच्चों? अबे जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। गामा रेज प्रोड्यूस्ड ओनली इन दी न्यूक्लियर रिएक्शंस। हाँ बोलो सर। भी हो सकते हैं सर। यस मे बी, बट आई हैव नो क्लू अबाउट बी, बट आई एम श्योर अबाउट डी, सो आई विल टिक डी। इफ इट इज केबीसी 7 करोड़ क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन यू विल टिक? 50-50 lifeline. No, in the 7 crore question you cannot use any lifeline. Sorry, it's okay. Now Sir, last B. question, सगुन के लिए आप हमेशा की तरह आखिरी क्वेश्चन छोड़ता हूं, और हमेशा की तरह एक डीपीपी आपके लिए बना रखी है मैंने 5 क्वेश्चंस की, और बहुत समय के पहले मैंने टारगेट अचीव कर लिया। कल क्या पढ़ोगे बोलो जल्दी। सर टेक्नीशियम कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या बेटा? सर टेक्नीशियम नहीं जानता मैं ये चीज भाई, क्या होता है ये? सर मैन मेड एलिमेंट। ना, नहीं जानता मैं इसको। सारा बताएगी। सारा कैसे होता है बच्चों? दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 1 2 3। होता सर एटॉमिक नंबर 43। नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा। अगर
फिजिक्स का है तो, एंड दिस इज योर होमवर्क आई एम पुटिंग इन द ग्रुप. गिव मी आंसर just after finishing all the batches today itself. Try to send me solution of my assignment. Okay, will you send? Say yes. Yes sir, we will send. Yes, What sir. will start in the next class बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स ओवर. निस्ते नाबूत हो गई मॉडर्न फिजिक्स. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स बचा है. क्या आप लोग मुझसे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के एटम बम बनाना सीखना चाहेंगे? हाँ Yes, sir. यस, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स और पाकिस्तान उड़ा देंगे. न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, एन बाय जेड रेशो, ब्लैक डॉग एनालॉजी. इट इज माय फेवरेट बच्चों. मैं आपसे सबको बताता नहीं हूं, लेकिन डीएवीवी का, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का न्यूक्लियर फिजिक्स डिपार्टमेंट ने मेरे को नौकरी देने का मन बना लिया था एक समय, लेकिन मैं नहीं गया. ये मत पूछना क्यों? अरे पैसे कम मिल रहे थे बच्चों, 15,000 रुपए मिल रहे थे. नहीं, वो तो पता- नौकरी क्यों देना चाहते थे आपको? अरे इंटरव्यू रिटर्न अपन ने क्लियर कर लिया था इंजीनियरिंग में भाई. जेआरएफ एक पोस्ट होती है, जूनियर रिसर्च फेलो. यहाँ पे आपको आराम से ज्वाइनिंग मिल जाती है, थोड़ा भी अगर आता है तो. लेकिन इतने कम पैसे ना, तब तक मुझे जब कोचिंग में 36,000 मिल रहे होते थे. 36,000 3 आवर्स के लिए. यहाँ पे मेरी 8 आवर्स की जॉब थी और 15,000 रुपए. ये मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैं यहाँ क्यों नहीं गया. दिस इज वेरी. अभी अब तक सीनियर रिसर्च फैकल्टी में हो जाते फिर तो. हाँ, और मुझे वो भी अवार्ड हो जाता, क्या बोलते हैं उसको, पीएचडी वगैरह भी मिल जाता. खैर छोड़ो, अपनी अपनी बात होती है. अब मैं तुम लोगों को साइंटिस्ट बनाऊंगा ना. ठीक है बच्चों, मैं आप लोग को होमवर्क भेज दूंगा, कर लेना. आई होप यू एंजॉयड माय क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स. प्लीज रिवाइज